in this question, even if you will commit a mistake, I will not have any complaint against you. In the previous question, because I have just made you clear about the transfer subject, reject subject, so I was just shocked how could you make a commit a mistake. But even the previous question you have done well, so I am satisfied. In this question, you can see who of the above was were actively associated with the Gadar party. Yes, D is the answer here. D. D is the correct answer. Ras Bihari Bose. Barendra Kumar Ghosh and Yogesh Chandra Chatterjee, they were basically associated with the Bengal politics. Ras Bihari Bose was at that time living a life of exile at Singapore. And Ras Bihari Bose, he was a mastermind. Mastermind means there was a plan that there would be a revolt against the British rule starting from Chittagong to Peshawar. And later you can say some army revolt occurred at Singapore. So Singapore में बैठे हुए Ras Bihari Bose भी इसमें associated थे. और वो सिंगापुर में निर्वासित जीवन एक तरह से जी रहे थे, खासकर जिसमें से दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस के बाद हार्दिक पर बम फेंकने के बाद जब वो यहाँ से भागकर सिंगापुर गए थे. तो डी इसका आंसर. इस क्वेश्चन में गलती होने की संभावना है. देयर इज चांस ऑफ mistake, so I am not having any complaint. In this question I expect you people have to select the right answer. So do the work. Put the following events in chronological order in ascending manner. Execution of Bhagat Singh Sukhdev Rajguru to Karachi Congress session, third Gandhi impact, and fourth Gandhi's participation in the second National Conference. And मतलब आप तो समझ रहे हो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी, कराची अधिवेशन, and Gandhi impact or Gandhi's participation in the second National Conference. So choice number A 3124 and B 3142 and C 1324 and D 1243. Be fast. Be fast. Maximum A. Mix क्यों है इसमें? This would have selected the right answer. देखो, earlier this is 5th March 1931, 23rd March 1931, Karachi Congress session. That is 29th March 1931, and Gandhi's participation 1932. So a bit late. So you can hear me 3, 1, 2, and 4. 3, 1, 2, and 4 is the answer. 3, 1, 2, and 4. What is the choice here? Maximum A. Okay, my students, very good. You have done well. A is the right answer. You yesterday have read the story. Gandhi with that signed the pact. There was a major issue. Why Gandhi didn't raise the issue of Sukhdev Bhagat Singh Rajguru. Yesterday have discussed this aspect. गांधी ने सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह के मतलब मृत्यु दंड को समाप्त करने के मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? ये मुद्दा तो कल आपने देखा. Then you find education. When Gandhi was just moving to Karachi, participate in Karachi session, you know, so he got the news of the education. So it happened after that. And then whenever he reached to Karachi station, he met with a procession of youths with black flags. It was the demonstration against Gandhi because already these great men were educated. So here you know that is the third one. Karachi session occurred after that. I didn't. Oh, not 1932. It is 1931 itself. Mistakenly I have a slide 1932, but it happened after that. After Karachi session, Gandhi went to London after that. In the latter phase, it happened in the last way. So 3124 is the answer. Actually, just you can say 1930. That is the third round table conference. First round table conference 1930, second round table conference 1931, and the third round table conference. So Gandhi went to participate in the second round table conference a bit late after the event. So 3142 is the answer. Sorry, 3124 is the answer. Question number 5. With reference to the history of India, Ulugan. Ab just my students, this question was in 2020 UPSC. उलूगन और द ग्रेट ट्रिब्यूट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स. मतलब इनमें से कौन सी घटना को उलूगन का नाम दिया गया? उलूगन हमने पीछे एक मूवमेंट में नाम लिया था उलूगन का. तुक्का लगाइए. इफ यू नो मोस्ट वेलकम. Then not do the intellectual guess. Choice A, the revolt of 1857, B, the Mopla rebellion of 1921, C, the Indigo revolt of 1859, and D, Birsa Munda revolt of 1899-1900. The question है 2020 UPSC. All D. Yes, good, excellent. I was a bit apprehensive whether people will actually do this question or will you commit the mistake. You have done D. That is the correct answer. Yes. Now, my students, I'm coming to the topic yesterday. I have not given you any model question on mains for your practice work. Today, I'll just give you. So that's why I'm directly coming to the topic now, because today I'm not having any specific question on mains to discuss with you people. But what I have told and what I have suggested you always keep in your mind the famous quote of Churchill: "Keep buggering in." You have not to get disheartened. In MCQ, you are just doing fairly well, and even on descriptive question, you can do equally well if you will continue your practice work. So never leave the practice work. First of all. After doing today, then I will deal with this question. My students, today we have to go in 1920 to 29. No, this one. Now we have to work here socialist and leftist in Indian national movement. My students, here we have already done up to second round conference, and this one the last I have already discussed this question. हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, आपको याद है? गांधी और अंबेडकर दोनों का कॉम्पिटिटिव स्टडी करना था, तो प्रीवियसली हम लोगों ने कर लिया था और इसका होमवर्क भी मैंने आपको दिया हुआ था, तो इसको मैं यही छोड़ता हूं. अब इसके बाद
हमें गांधी हाइडन अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम स्टडी हैव फिनिश्ड दिस वर्क and Gandhism proved to be the most dangerous weapon against the British government. This is a very standard question. You have to answer the question. The whole culture of Western imperialism was based on violence, and the Ministry of the Administration and Internal Security was military power. The production system was based on competition and expansion of capitalist market, also involved war and conflict. In this sequence, Gandhism proved to be more dangerous weapon against the British Empire. That imperialist power had no solution for Gandhian approach. This can be understood through the following points. मतलब आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि गांधी जी का जो अहिंसा है वह ब्रिटिश के विरुद्ध सबसे खतरनाक हथियार है। क्यों? इंट्रोडक्शन में आपको कहा गया कि होल जो ब्रिटिश या यूरोपियन कल्चर मतलब वेस्टर्न कल्चर है वायलेंस पर एक तरह से वहां पर वायलेंस की प्रधानता कोई न कोई रूप में है, क्योंकि एक तो उनका जो सिक्योरिटी है सुरक्षा प्रणाली है वो भी कहीं ना कहीं वायलेंट मेथड कॉर्सी मेथड पर बेस्ट है, कॉर्सी मेथड पर। और दूसरा कहा गया कि देखिए उन्होंने कैपिटलिज्म को प्रमोट किया। कैपिटलिज्म में क्या होता है उसको कहते हैं कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। गला काट प्रतिस्पर्धा होती है, तो उस प्रतिस्पर्धा में आपस में तनाव बढ़ता है, युद्ध होता है, मार्केट के लिए वॉर होता है। उनका तो पूरा का पूरा जो कल्चर है वो कल्चर कहीं वायलेंस पर बेस्ड है। तो यहाँ पर गांधी जी ने उसके बदले उन्होंने एक नया वेपन लाया। दिस कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट है कि ऑल क्लासेस ऑफ सोसाइटी लाइक फार्मर्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्रेडर्स, चिल्ड्रन, वुमेन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स गांधी नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह व्हिच स्ट्रेंथेंड द नेशनल मूवमेंट। Thus Gandhi introduced an alternative method of politics through it, and this method became more fatal to the British imperialism. यानी गांधी इसको this method became more fatal. तो गांधी सारे वर्गों को नॉन वायलेंस और सत्याग्रह के आधार पर जोड़ पाए और ब्रिटिश के लिए खतरनाक हथियार सिद्ध हुआ। लाइकवाइज ही एम्फसाइज्ड क्लास कोलैबोरेशन रेदर देन कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ कंपटीशन एंड इंपीरियलिज्म। जैसे उन्होंने वर्ग समन्वय की बात की, वर्ग संघर्ष की बात नहीं की जो पूंजीवाद का जिसमें विशेष बल होता है। एंड गांधीज कांसेप्ट ऑफ स्वराज वाज आल्सो यूनिक थ्रू व्हिच ही ट्राइड टू एम्फसाइज मोरल फ्रीडम। इन फैक्ट इन द बुक हिंद स्वराज ही ट्राइड टू एक्सप्लेन द एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर हिम। मतलब उनका फ्रीडम का भी कांसेप्ट थोड़ा निराला है, अलग है। मोरल फ्रीडम की बात करते हैं तो हिंद स्वराज में उन्होंने कहा है नैतिक स्वतंत्रता। ही ओपनली क्रिटिसाइज्ड द मेटेरियलिस्टिक कल्चर ऑफ वेस्ट। अनलाइक वेस्ट गांधी एम्फसाइज्ड द पंचायती राज एंड प्रेजेंटेड द मॉडल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे वेस्ट में सेंट्रलाइजेशन तो उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन का मॉडल दिया। थ्रू विलेज कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ही कनेक्टेड लैक्स ऑफ विलेज विद द पॉलिटिक्स ऑफ द कांग्रेस। लाखों विलेज को जोड़ दिया। देन अपार्ट फ्रॉम दिस ही प्रोवाइडेड अ वेपन ऑफ नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह टू द ऑप्लेस पीपल living in different parts of the world to fight against the imperialist power. For example, Martin Luther King, an activist of USA, Nelson Mandela, a leader of South Africa, etc., adopted the method of non-violence and satyagraha. मतलब इसमें कहा गया कि भाई उन्होंने भारत में ही अपनी विरासत नहीं छोड़ी। पूरे विश्व में अपनी विरासत छोड़ी, अपनी लेगेसी छोड़ी, क्योंकि बाद में मार्टिन लूथर किंग आप देखो एक ब्लैक लीडर हुए अमेरिका यूएसए में, मार्टिन लूथर किंग, जिनका एक फेमस कोट आता है, फेमस स्पीच, आई ड्रीम, मेरा सपना है कि कैसे ब्लैक को इंपावरमेंट होगा अमेरिका में। अमेरिका में 1960 में एक सिविल मूवमेंट चलाया था फॉर द यू कैन से फॉर डिमांडिंग द राइट ऑफ इक्वालिटी फॉर ब्लैक्स। तो द मेथड ऑफ नॉन वायलेंस सत्याग्रह इन दिस वे गांधी फिलॉसफी प्रूव टू बी फैटल फॉर द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। तो ये एक क्वेश्चन था। अब मैं स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल 1935 पर हम बाद में आएंगे, पहले मैं आपको सोशलिज्म पर ले चलता हूं। Socialism and collective control over the means of production. Actually, here the description is a bit different, but my diagram is a bit different. After doing up to Harian upliftment program, then I have moved to the socialism and leftism and its impact on the national movement. So here I am making clear. Even this is the diagram. So here I am giving the parallel diagram. Socialism, collective control over the means of production and distribution. Class struggle through class collaboration. Violent revolution, Marxism, scientific socialism, and here you can say democratic system and democratic socialism. I am just making the same point. First, my students are taking about socialism. My students, today I am making you clear about what is socialism, what is Marxism, what is communism. Today I have to make you clear here. You have to be mentally alert. If you will just ask me what is the broader meaning of socialism, the broader meaning of socialism is collective control over the means of production
and that of distribution. मतलब here someone is going to raise you the question, what is socialism? So here you have to make this point clear. Socialism believes the collective control over the means of production and that of distribution. मतलब समाजवाद वह विचारधारा है जो इस बात की वकालत करती है कि उत्पादन और वितरण, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उत्पादन और वितरण के साधन पर कुछ लोगों का नियंत्रण न होकर सामूहिक नियंत्रण हो. ओके, तो मतलब जो मींस ऑफ प्रोडक्शन है और मींस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर एक कलेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए, कुछ लोगों का कंट्रोल नहीं होना चाहिए. ये कहना है सोशलिज्म का. अब नाउ वी हैव टू मूव हियर. अब हियर यू कैन से बट डिफरेंस इन अप्रोच. अब देखो डायग्राम ऑलरेडी तुमको पीछे दिया हुआ है, दैट इज नॉट एनीथिंग, बट हियर आई एम जस्ट गिविंग द रिटन फॉर्म सो दैट यू विल बी मोर क्लियर. अब डिफरेंस इन अप्रोच, अब यू फाइंड कि डिफरेंस इन द अप्रोच, मतलब मुद्दा यह है कि ठीक है हमें उत्पादन और वितरण पर सामूहिक नियंत्रण करना है, तो हाउ दिस कंट्रोल हैज टू बी इंश्योर्ड, व्हाट शुड बी द मेथड ऑफ कंट्रोल. तो हियर यू कैन से कि वन व्यू इज थ्रू क्लास कोलैबोरेशन. थ्रू क्लास कोलैबोरेशन मतलब एक मेथड क्या है कि देखिए ये हो सकता है वर्ग समन्वय के द्वारा, मतलब मिला जुलाकर प्रेम भाव से जो रिच पीपल हैं उनके मन में गरीबों के लिए करुणा का भाव जगाकर, मींस कि थ्रू कोलैबोरेशन, थ्रू कोऑपरेशन, थ्रू अराउजिंग अ सेंस ऑफ कंपैशन इन द हार्ट ऑफ द रिच फॉर द पुअर, मींस कि द रिच पीपल शुड एक्चुअली वी शुड ट्राई टू इनकलकेट सम सेंस ऑफ कंपैशन इन द अमंग द रिच फॉर देयर पुअर ब्रेथरेन. सो इन दिस वे थ्रू कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन वी कैन मेक द चेंज. तो मतलब एक प्रकार के थिंकर्स हुए जिन्होंने कहा कि प्यार से, प्यार मोहब्बत से, मिला जुलाकर आपस में सहयोग से धनी लोगों में करुणा का भाव जगा के हम ऐसा कर पाएंगे. ऐसे जो सोशलिस्ट थे तो कहलाए यूटोपियन सोशलिस्ट. अब यूटोपियन सोशलिस्ट का मतलब हुआ काल्पनिक या अत्यधिक आदर्शवादी, एक्सेसिव आइडियलिस्टिक, और who lives in his make believe world, not in reality. Actually this term utopia has been utopian has been originated from the name of a text utopia. This text utopia was associated with the 16th century and the author was Sir Thomas More. So Sir Thomas More composed the famous text Utopia, and in this text he drew a picture of a society in which there is no scope for the conflict and there was the total peace among the people and the people were living together peacefully and with a sense of cooperation with each other. There was no economic division, there was no social division, there was complete harmony within society. तो एक सर टॉमस मूर 16th सेंचुरी का एक ब्रिटिश ऑथर था, उसने एक टेक्स्ट लिखा था यूटोपिया. तुम लोग आप लोग मेंटली अलर्ट रहना, मेरे पूरे लेक्चर सोशलिज्म, लेफ्टिज्म, मार्क्सिज्म को सुनो, एंड इन द लास्ट आई विल आस्क यू द क्वेश्चन एंड यू नो दैट अंकुर इज ऑलरेडी वर्किंग एज न्यू संजय, यू नो, so he will ask you the question through Ankur. I will just try to elicit your reaction. So once you have to go through it and then you have to respond to my question. So be mentally alert. या द यूटोपियन सोशलिस्ट मींस कि दो एक्चुअली सर टॉमस मूर ने एक टेक्स्ट लिखा जिसका नाम है यूटोपिया, और उस यूटोपिया में उन्होंने एक ऐसे आदर्श समाज की परिकल्पना की जिसमें कोई इकोनॉमिक डिवीजन नहीं है, कोई सोशल डिवीजन नहीं है, लोग बहुत ही पीसफुली प्यार मोहब्बत से रहते हैं. तो क्योंकि ऐसा समाज व्यावहारिक जगत में संभव नहीं है, रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो एक फ्रेज निकल पड़ा यूटोपियन, मतलब जो चीज व्यावहारिक ना हो वह यूटोपियन है. तो हियर इज द टर्म. My friends, actually in 1830s in France, there emerged some middle class thinkers who talked about to bring the socialist change within society and to remove the apathy and remove the, you can say, drudgery of the industrial life through cooperation between the workers and capitalists. For example, you can say Saint Simon, Charles Fourier, then you know Robert Owen from Britain. So these were such thinkers who believes in collaboration between the industrialists and the workers and to bring the change. In India, you can say Gandhi can fall into this category, you know, and Leo Tolstoy in Russia, you know. So they're talking about the social change, the economic distribution, but through class collaboration. But it is not realized to be. It was not to be realized in real life. It was a very, you can say, simply exist in our idea. किसी ने कहा कि स्वेच्छा अगर स्वार्थ छोड़ दे तो अपवाद है. If someone is going to discard his wealth willingly, it is really an exception. It is not possible. तो इसलिए in one sense, this sort of socialism is not the true socialism. It is, you can say, just, you know, a pseudo socialism, not the real socialism in one sense. Then you'll find through class collaboration. Sorry, through class conflict. Through class conflict. What does this concept of class conflict says? What does this concept of class conflict say? According to this concept, you know, willingly the people would not discard their and leave their benefit, their profit. It is not practically possible for the people to discard their profit. So the people had to be compelled to change themselves. The people had to be compelled to change themselves. They had to change themselves. They will not leave them and they will not do it willingly. But
they had to be compelled to make a distribution of their wealth. मतलब कि कोई स्वेच्छा से तो नहीं करेगा, उनको जबरन बदलवाना पड़ेगा और जबरन उनसे अतिरिक्त जो रिचनेस है, अतिरिक्त जो रिसोर्सेस है वो लेना पड़ेगा। अब इसमें भी दो मेथड है। इसमें एक है थ्रू वायलेंट रेवोल्यूशन। थ्रू वायलेंट रेवोल्यूशन, जो थ्रू वायलेंट रेवोल्यूशन की बात करता है, दैट इज मार्क्सिज्म। दैट इज मार्क्सिज्म। एंड फॉर मार्क्सिज्म, normally for Marxism you will find the term Marxism, you will find the term scientific socialism. For Marxism you will find the term scientific socialism. Then another name is, through democratic means. Democratic means. Through democratic means, it is, you can say, democratic socialism. Democratic socialism. Actually, my friends, you should not find any sort of difficulty between the two. Actually, both believes in class conflict. We have to compel the people to discard their extra richness. But what should be the method for that? According to Karl Marx, you have to do the blood revolution. The workers of the world unite. You have to develop a sense of class consciousness, and then you have to make an attack on the system by dint of your hammer and break the system, capture the power, and try to uproot the bourgeoisie class. Marx preferred to call bourgeoisie class to the capitalist class, and to the workers, you can say that is the proletariat class. It talks about the grouping and the consciousness among the proletariat class. Proletariat class means the industrial working class. Marx didn't believe peasants to be the, you can say, Marx didn't believe that the peasants could have been a proletariat because the peasants were owning the private property. According to Karl Marx, those who were owning the private property could never be a proletariat. So according to the Marxian calculation, it was basically, that is Marxist scientific socialism. Marxism scientific socialism. So Karl Marx believed that peasants could never be a true proletariat because the peasants were owning the private property, and those who are owning the private property can never be a true proletariat. For being a true proletariat, what do you require? You require here, in order to be the true proletariat, you are supposed to be free from the private property completely. Industrial workers were the true proletariat according to Karl Marx. Now, so Marx believed that the workers had to capture the power through violent method. So that is the blood revolution, and that is called scientific socialism. But there was a group of other thinkers who believed, no, blood revolution is not a solution. Violence should be discarded. We use to parliamentary means. We have to use the democratic means. We have to make the laws, and through making laws, we have to snatch the extra property from the people, and then we have to carry the objective of economic redistribution. So those who believe in this theory, so that is called the theory of class collaboration. That is characterized as the theory of, characterized as democratic socialism. Because here you can see there should have been the distribution of wealth, but this economic redistribution had to be carried through, not the violent revolution, but through parliamentary means. So that is called the democratic socialism. And here I have to give you the information. मतलब इनका, जैसे कार्ल मार्क्स का कहना है कि उसने सर्वहारा शब्द कहा है प्रोलेटेरिएट को, मतलब औद्योगिक श्रमिक को। कहता है कि किसान सर्वहारा नहीं हो सकते, जो किसानों के पास अपनी निजी संपत्ति होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। तो उसने जो श्रमिक है उसी को सर्वहारा कहा, और बुर्जुआ कहता है पूंजीपति वर्ग को। तो उसका कार्ल मार्क्स का सीधा सा मेथड है कि भाई सर्वहारा वर्ग में लोगों में एकता का भाव है, वर्गीय चेतना आ जाए, और वो सीधे सिस्टम पर हमला करके बुर्जुआ को दबाकर समाप्त करके उसकी प्रॉपर्टी छीन ले और सबको कलेक्टिव प्रॉपर्टी बना दे। ये कार्ल मार्क्स का मेथड है। उसके लिए मतलब हिंसा चाहिए, वायलेंस होना है। और इधर जो दूसरा वाला है डेमोक्रेटिक, उसका कहना है कि देखिए इसके लिए आपको वायलेंस करने की जरूरत नहीं है, आप पार्लियामेंट के थ्रू बनाइए, और लॉ बना के जिसके पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है उसको छीन लीजिए, लॉ बना के थ्रू लीगल प्रोसेस। उसके लिए वी हैव नॉट यूज द मेथड। तो आप इंडियन कंटेक्स्ट में कहोगे तो इंडियन कंटेक्स्ट में जैसे ये जो मार्क्सिस्ट है उसमें पीसी जोशी, एमएन रॉय, ये सब है मार्क्सिस्ट, है ना। और यहां पर है नेहरू, आचार्य नरेंद्र देवा, ये लोग हैं ये। अब here you find the term like leftism. So here I have to make you clear. You find the term leftism. You may be a bit surprised. Like what is leftism then? Here you find leftism. So both that is leftism. So I am making clear. इसको हिंदी में कहते हैं वामपंथी। अब वामपंथी क्या है? दो टर्म है, लेफ्टिज्म एंड राइटिज्म। वामपंथी और दक्षिणपंथी। Actually both the term leftism and rightism have originated from the French Revolution. Actually, in French Revolution, we'll come to know in course of the French Revolution, there was a concept of, in course of the French Revolution, there was a concept of, you can say, that was a national convention. And this national convention was having the two chambers.
Actually, when the French Revolution occurred, you can say, so there was a parliament. After that, there was the formation of a parliament. A king simply remained to be a constitutional monarch. So there was a parliament. In parliament, you can say there was the sitting arrangement. It was a matter of chance that the pro-monarchical elements, those elements in parliament, those representatives who believed in the power of monarchy should have been restored. The power of monarchy should have been restored. Those who believed, so that is royalist group. So this royalist group was sitting in the right direction. And in left direction, there was the Girondists and Jacobians. So Jacobians were too much radical, and they were talking in terms of the total change, the radical change. And they believed that, they believed in radical change, and they believed that this leftist, so the leftist, that is Jacobians, the monarchy should be, institution of monarchy should have been abolished, and there should be the foundation of republic in France. So as they believed in status quoism, this royalist, so they were called rightists. It was merely a chance. Or suppose you can say there could have been simply a swap with the leftist radical members in the right and you can say a status quoist in the left. Then the term could have been the opposite connotation today. But it was a matter of chance that they were sitting in left. So those who were the radical party, radical thinkers, and those who believed in the total change, the radical change, they were called leftist. And those who believed that, the emphasis was on the tradition, on the status quoism, that was called rightist and leftist. So my friends, the left, this one, the communist as well as the democratic socialist, who are talking about the class conflict, so they were called leftist as well. वो लेफ्टिज्म में विश्वास करते तो उनको लेफ्टिस्ट कहा जाता है. So it is the term leftism from there because they are just talking about the total change. This point is clear. And the last, you find here the term communism. जैसे मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, पहले हिंदी में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं समझ पाएंगे हो सकता है. देखिए, एक्चुअली हुआ जो फ्रांस की क्रांति हुई, तो फ्रांस की क्रांति का जो वहाँ का मोनार्क था, राजा था, उसको संवैधानिक बना दिया गया, उनसे शक्ति छीन ली गई और एक पार्लियामेंट बना, संसद जिसको बोलते हो. तो संसद में जैसे मैं स्पीकर हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे वहाँ पर जो मेंबर्स का सीटिंग अरेंजमेंट था, तो जो लेफ्ट साइड में मेंबर्स बैठे हुए थे, राइट साइड में, तो राइट साइड में जो मेंबर्स बैठे हुए थे राइटिस्ट थे कहलाए, और जो लेफ्ट में बैठे हुए थे लेफ्टिस्ट कहलाए. और ये संयोग ऐसा था कि राइट में जो बैठे हुए तो राजा के पक्षधर थे, वो रॉयलिस्ट थे और वो चाहते थे कि राजा की पुरानी शक्ति को बहाल की, जो पुरानी व्यवस्था को लागू करना चाहते थे. और जो लेफ्ट में बैठे हुए थे वो बड़े उग्र सुधारवादी थे, जैसे उसमें जैकोबियंस थे, और वो मानकर चलते थे कि नहीं, पुरानी व्यवस्था को बहाल मत करिए, बल्कि गणतंत्र को स्थापित करिए, रिपब्लिक को एस्टैब्लिश करिए, टोटल चेंज करिए. तो बहुत एक मौलिक सुधार की बात करते थे. तो लेफ्टिस्ट वो रेडिकल्स मेंबर, और चूंकि रेडिकल मेंबर्स बाएं भाग में बैठे हुए थे, सो दैट्स व्हाई दे वर कैरेक्टराइज्ड एज द लेफ्टिस्ट. Here you find the term like rightist and the term leftist. So this both the terms originated in course of the French Revolution. So this leftist term has been, now you can say the leftist term has been established. This leftist term has been established for the socialist and the communist. तो मतलब जो वामपंथी शब्द है वो इन उग्र सुधारवादी होते हैं, कम्युनिस्ट और डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक समाजवादी, उनके लिए वामपंथी शब्द लेफ्टिस्ट शब्द चल निकला है. अब यू फाइंड द टर्म कम्युनिस्ट या कम्युनिज्म. देखो कम्युनिज्म, actually Karl Marx, I will teach you in the world history part, not here. Karl Marx just conceived the three different stages of the revolution. According to him, the first stage of the revolution was the direct action. Through direct action, the power had to be captured. मतलब जो प्रत्यक्ष कार्रवाई है, प्रत्यक्ष कार्रवाई के माध्यम से जो सत्ता है, जो अथॉरिटी है, उस पर कब्जा कर लिया जाएगा. तो you will find that the term you can say कि direct action का मतलब है to make an attack on the system and capture the power. That is called direct action. Then you find the second one term, dictatorship of proletariat. मतलब Karl Marx believes that once the proletariat class was going to seize the power, then he had to establish the dictatorship of the proletariat class, and on the basis of establishing the dictatorship, he should try to destroy the bourgeoisie class and dismantle the power. मतलब कि उसके बाद उसको बुर्जुआ वर्ग पर कब्जा कर लेना चाहिए, मतलब उसको उसने सत्ता पर कब्जा करना चाहिए और बुर्जुआ वर्ग को मिटा देना चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी को समाप्त कर देना चाहिए. और फिर उसका कहना है कि जब सेकंड स्टेज में आप आओगे, when you will come into the second stage, so in second stage of the revolution you have to perform dual work. On the one hand you have to uproot the bourgeoisie class, on the other hand you have to export the revolution to different parts of the world. And you have to export the revolution in different parts of the world, because wherever the revolutionary ideas will go, there the revolution would occur. So in all the regions there would be the proletariat revolution as the result of the export of ideas to different regions. So everywhere the proletariat revolution had to occur. So as the revolution would occur, so everywhere there would be the dictatorship of proletariat class. Everywhere there should be the dictatorship of proletariat class. So then will come the third stage. And about the third stage, use the term classless and stateless society. So when the revolution will reach up to the third stage, and the third stage there would emerge to be a classless and stateless society. Because everywhere you can say there would be the dictatorship of proletariat in every region. So there is the single one class, that is called the proletariat class, and the single one state, that is the proletariat state. So now we are not having any need for the state. So now the state is not required at all. So let the state wither away, let the state be dismantled, and in the whole world there will be the single one state, that is the state of the proletariat class, and there will be the single one class, that is the proletariat class. So that is a stateless and classless society. So according to Karl Marx, Karl Marx used the term communism for this stage, the third stage. But this third stage never occurs. The revolution remained to be, and the revolution remained in the second stage itself. So later you can say this communist term became synonym for the second stage only. And wherever the Marxism, there is communism. So today this term communism is being used as a substitute for Marxism. मतलब मैंने आपको बताया कि देखो, कार्ल मार्क्स ने क्रांति के तीन चरण बताए. कहा कि पहले चरण में सर्वहारा वर्ग को चाहिए, प्रोलेटारिएट को, कि वो सत्ता पर कब्जा कर ले, और फिर सेकंड स्टेज उसने कहा सर्वहारा की तानाशाही स्थापित हो जाएगी, डिक्टेटरशिप प्रोलेटारिएट. इस स्टेज में सर्वहारा वर्ग को दो काम पूरा करना है. एक तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को समाप्त करके बुर्जुआ को सर्वहारा में लाना है, और फिर इस स्टेज में उसे रेवोल्यूशन का प्रसार दूर दूर क्षेत्रों में करना है. तो जैसे जैसे रेवोल्यूशन का प्रसार करता जाएगा, उसका कहना है कि जैसे जैसे रेवोल्यूशन को स्प्रेड करता जाएगा और उसका रेवोल्यूशन जब चारों तरफ स्प्रेड होता जाएगा, तो फिर क्या होगा कि रेवोल्यूशनरी आइडियाज हर जगह फैल जाएगा. तो रेवोल्यूशनरी आइडिया जब हर जगह फैल जाएगा, तो हर जगह वहां पर सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित हो जाएगी. तो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित हो जाएगी, जब हर जगह जब सर्वहारा का शासन होगा, तो फिर अब स्टेट की जरूरत
नहीं रह जाएगी। अब वो स्टेज आएगा जिसको उसने कहा कि स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी। तब जो स्टेज आएगा वह एक वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज का स्टेज होगा, जब एक ही वर्ग होगा सर्वहारा वर्ग और एक ही राज्य होगा सर्वहारा राज्य, पोलिटिकेट राज्य। तो जो तीसरा स्टेज है वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज, उसी के लिए उसने कम्युनिज्म शब्द का प्रयोग किया था, साम्यवाद शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन तीसरा स्टेज आया ही नहीं, वो मैं आपको वर्ड स्टेज बताऊंगा, दूसरे स्टेज में रह गया। तो अब जो जहां भी मार्क्सिस्ट व्यवस्था कायम हुई, जो भी स्टेट में मार्क्सिस्ट मॉडल स्टेब्लिश हुआ, चाहे रशिया हो चाइना हो, उसी के लिए कम्युनिस्ट टर्म का प्रयोग शुरू हो गया। सो दैट थ्री, दिस इज द स्टेज, सोशलिज्म, कम्युनिज्म एंड यूटोपियन सोशलिज्म, क्लास कोलैबोरेशन, क्लास स्ट्रगल। सो मिस्टर अंकुर, इन्फॉर्म मी, आर माय स्टूडेंट्स क्लियर अबाउट सोशलिज्म, लेफ्टिज्म, मार्क्सिज्म एटसेट्रा, कम्युनिज्म? हिंदी में देखो, मैंने सब कुछ आपको समझा दिया है, बट स्टिल आप बेसिक से क्वेश्चन उठा रहे हो। अब थोड़ा मेंटली अलर्ट हो जाओ, फिर मैं एक बार ट्राई करता हूं एंड देन आई आस्क यू। कि सोशलिज्म और मार्क्सिज्म में क्या रिलेशनशिप है, तो आप कहोगे जो रिलेशनशिप इंडियन में है, पंजाबी में है, इंडियन और बिहारी में है, इंडियन और बंगाली में है, वही है। सोशलिज्म एक लार्जर इकाई है, उसी में मार्क्सिज्म उसका एक पार्ट है। क्योंकि आप देख रहे हो कि इसमें यूटोपियन सोशलिज्म भी उसी सोशलिज्म में है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी उसी सोशलिज्म का पार्ट है, और मार्क्सिज्म भी उसी का पार्ट है। तो एक तरह से समझो तो सोशलिज्म एक लार्जर आइडिया है, जो बोलता है कि मींस ऑफ प्रोडक्शन और कंजम्पशन पर देयर शुड बी द कलेक्टिव कंट्रोल, उस पर एक सामूहिक नियंत्रण चाहिए। अब क्या हुआ कि अब कैसे उस पर कंट्रोल होगा? ठीक है, कलेक्टिव कंट्रोल तो होगा, परंतु कंट्रोल कैसे होगा? उसमें एक मेथड बताया जाता है कि कंट्रोल ऐसे होगा कि लोगों के मन में, वी हैव टू डेवलप अ सेंस ऑफ कंपैशन इन द कंपैशन अमंग द रिच पीपल। जो धनी मानी लोग हैं, उनके मन में एक गरीबों के लिए दया का भाव जाएगा कि प्यार मोहब्बत से चेंज लाएंगे। ये वो काल्पनिक थे, आदर्शवादी थे, रियलिटी नहीं थी, उसको यूटोपियन सोशलिस्ट कहा गया, तो उनको अलग खाड़ी। कर दीजिए। दूसरे ग्रुप ऑफ जो सोशलिस्ट है वो कहते हैं नहीं, प्यार से तो नहीं होगा, हमको उसके लिए उनको जबरन बदलवाना पड़ेगा। तो जबरन बदलवाना पड़ेगा, वी हैव टू फोर्स देम टू डिस्कार्ड देयर एक्स्ट्रा वेल्थ। तो दैट बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। ये वर्ग संघर्ष में विश्वास करते हैं। इसमें भी फिर दो सब ग्रुप हो गया। एक हो गया जो मार्क्सिस्ट है, वो कहता है कि उनको बदलवाने के लिए हमको वायलेंस का प्रयोग करना है, और उसमें उसने इंडस्ट्रियल वर्कर्स को प्रोलेटेरिएट कहा। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा प्रोलेटेरिएट क्या है, मैंने आपको कितनी देर पहले कितनी मेहनत से समझाया कि भाई जो कार्ल मार्क्स है वो कहता है जो औद्योगिक श्रमिक उद्योगों में काम करते हैं, जिनके पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, जो डेली वेज अर्नर होते हैं, दे आर प्रोलेटेरिएट। उसने पेजेंट्स को प्रोलेटेरिएट इसलिए नहीं माना, बाद में इसको चाइना के माओ सेतुंग ने माना, लेकिन उसने नहीं माना। उसने क्यों नहीं माना? उसका कहना यह था कि पेजेंट्स के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, उनके पास निजी संपत्ति होती है, दे कैन नेवर बी प्रोलेटेरिएट। प्रोलेटेरिएट होने के लिए प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। तो समझ गए प्रोलेटेरिएट कौन है। और कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिस्ट क्लास को, जिसको पूंजीपति वर्ग कहते हैं, उसको बुर्जुआ कहा है। दैट इज कॉल्ड बुर्जुआजी इन इंग्लिश, इन हिंदी दैट इज कॉल्ड बुर्जुआ। तो उनको बुर्जुआ कहा है कार्ल मार्क्स ने, तो वही बुर्जुआ हुआ और सर्वहारा हुआ, यानी बुर्जुआजी एंड प्रोलेटेरिएट क्लास हुआ। समझ गए हम? तो उसका वायलेंट मेथड की बात करता है। लेकिन जो दूसरा वाला ग्रुप है, इसको डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहते हैं, कहते हैं देखो भाई वो प्यार से तो नहीं देंगे, उनसे हम वी हैव टू कंपेल देम टू डिस्कार्ड देयर प्रॉपर्टी, बट फॉर दैट वी हैव नॉट टू यूज द वायलेंस, रादर वी हैव टू यूज द डेमोक्रेटिक मींस, वी हैव टू मेक द लॉज थ्रू पार्लियामेंट, एंड थ्रू मेकिंग द लॉज वी हैव टू स्नैच द एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी फ्रॉम देम। तो ये डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट में तो विश्वास करते हैं, परंतु वायलेंस में नहीं करते हैं। अब कार्ल मार्क्स ने ये दोनों को हम कहते हैं लेफ्टिस्ट। अब लेफ्टिस्ट क्यों कहते हैं? तो मैंने आपको बताया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो लेफ्ट साइड में बैठते थे वो रेडिकल चेंज की बात करते थे, जो राइट साइड में बैठते थे वो स्टेटस क्विज्म की बात करते थे, यथास्थितिवाद की बात करते थे। तो ये चूंकि कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट दोनों रेडिकल चेंज की बात करते हैं, तो दे वर कॉल्ड लेफ्टिस्ट। और मतलब ये डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट उनको लेफ्टिस्ट ही कहते हैं। अब आइए, सॉरी, मार्क्सिस्ट एंड डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, अभी ये कम्युनिज्म का क्या चक्कर है? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो रेवोल्यूशन होगा हमारा, उसका 3 स्टेज होगा। पहला स्टेज में जो प्रोलेटेरिएट क्लास है वो पहले अथॉरिटी पर कब्जा करेगा वायलेंस से, और कब्जा करने का तब सेकंड स्टेज आएगा। उसने कहा कि तब वो डिक्टेटरशिप अपना स्थापित करेगा। क्यों? जब तक वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को समाप्त न कर दे। और प्राइवेट प्रॉपर्टी को समाप्त करेगा तो बुर्जुआजी समाप्त हो जाएगा, वो भी प्रोलेटेरिएट ही बन जाएगा। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी रहेगी नहीं, और प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेगी तो आप प्रोलेटेरिएट बन जाओगे। और कहा कि इस चरण में, अब जैसे मान लो एक कंट्री में अगर रेवोल्यूशन हुआ, तो रेवोल्यूशन का वहां के लोग रेवोल्यूशन को एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे क्षेत्र में। कितना टेम्परेचर? हाँ, तो पता नहीं, गर्मी लग रही है, थोड़ा सा स्लाइटली कर दो 43। तो कहा कि भाई कितना है, कर दिया। हाँ, तो मैं पॉइंट इज, उन्होंने कहा कि जो वायलेंस है वो वायलेंस, हाँ, उसने कहा जो कार्ल मार्क्स ने कहा कि सेकंड स्टेज पर रेवोल्यूशन आएगा, तो क्योंकि एक रीजन में होगा सर्वहारा का तानाशाही, तो उसके लिए उसी समय सर्वहारा वर्ग को करना है कि एक तरफ प्राइवेट प्रॉपर्टी को मिटाना है, दूसरी तरफ वहां से रेवोल्यूशनरी आइडिया दूसरे क्षेत्र में एक्सपोर्ट कर देना है, निर्यात कर देना है। तो वहां भी रेवोल्यूशन हो जाएगा। तो वहां पर भी प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन होगा, वहां पर भी डिक्टेटरशिप प्रोलेटेरिएट हो जाएगा। फिर दूसरे से तीसरी जगह चला जाएगा, तीसरे से चौथे, तो पूरे वर्ल्ड में रेवोल्यूशन हो जाएगा, और एक ही क्लास बच जाएगा जिसको उसने कहा अब वो प्रोलेटेरिएट क्लास होगा, और एक ही स्टेट बच जाएगा, प्रोलेटेरिएट क्लास का स्टेट बच जाएगा, सर्वहारा का राज्य बच जाएगा। तो अब क्या है कि पूरी दुनिया में सर्वहारा का शासन होगा। तो उसने कहा था कार्ल मार्क्स ने कि द स्टेट इज ए नेसेसरी एविल। द स्टेट इज ए नेसेसरी एविल, मतलब जो राज्य है वो आवश्यक बुराई है, मतलब राज्य की आवश्यकता नहीं है, राज्य केवल इंटरवेनिंग पीरियड के लिए है। तो उसने कहा कि फिर क्या होगा कि राज्य की जरूरत नहीं रह जाएगी, तो राज्य विदर अवे कर जाएगा। तो पूरी दुनिया में एक ही राज्य होगा, वो होगा सर्वहारा का राज्य, और एक ही वर्ग होगा, सर्वहारा का वर्ग। उसको उसने कहा क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी, मतलब देयर विल बी द सिंगल वन क्लास प्रोलेटेरिएट एंड द ओनली स्टेट प्रोलेटेरिएट स्टेट। तो क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी जो उसने कहा, वो थर्ड स्टेज के लिए उसने टर्म का यूज किया कम्युनिज्म, जब प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, पूरा इक्वलिटेरियन सोसाइटी हो जाएगी। तो आपको मैं वर्ल्ड स्टेज बताऊंगा कि ये स्टेज आया ही नहीं, कार्ल मार्क्स को सोचता ही रह गया, केवल वो ख्वाब देखता रह गया।
तो आया क्या दुनिया में, तो दुनिया में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट स्थापित हो गई। पॉलिटिकल रेवोल्यूशन तो नहीं हुआ, लेकिन कहीं कहीं आपने देखा समाजवादी सरकार स्थापित हुई। तो जहां जहां पर मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट स्थापित हुई रशिया में, चाइना में, तो उस गवर्नमेंट के लिए कम्युनिस्ट शब्द का प्रयोग चल निकला, लेकिन थियरेटिकली ये थर्ड स्टेज के लिए था, जो थर्ड स्टेज कम्युनिज्म का कभी नहीं आया। तो यही मैंने मुझे समझाना था आपको। अब मैं पता नहीं समझा पाया कि नहीं। अंकुर, जस्ट आस्क देम, याद है? ओके, who had asked this question? Lazy. Actually, don't here try to go beyond. Actually, here I have not here come to teach you in totality the socialism of Marxism. For that, there is the different you can say part, and that is the world history part. So I'll discuss this aspect of Marxism in the world history. Please, Lazy, here simply make me clear. Don't try to divert from the main course. Otherwise, here you have to assess the impact of socialism and Marxism on the national movement of India. So whenever you will go in deeper, what will happen in the classless and stateless society, Marx himself is silent. Marxism is having several flaws. But I will just clarify this vision in the world history part. So please here stop here and simply ask the question what I have taught you. Okay? Then in course of national movement, from 1920s, you will just come to realize classify means actually socialism and communism, the democratic socialism is already under the democracy. You will ask Marx whether you will ask Marx, if you are going to ask and put a question to Marx, are you taking this democratic socialism as the true socialism? So Karl Marx will reject it. You know, this is the bourgeoisie government. वो कहेगा democratic socialism bourgeois वर्ग का नाटक है, democratic कुछ नहीं है। तो बेसिकली जिसको तुम democratic socialism कहते हो, उसको तो बस वही democracy में co-opt हो गया। तो जो आइडेंटिफाई कर सकते हो जिसको actual socialist government, तो मार्क्सिस्ट ही है। This is the point. In 1920s and 1930s, you come to know the political and the economic front of ताशकंद में जाके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की, लेकिन उसको आप औपचारिक रूप में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन की शुरुआत इंडिया में नहीं मानेंगे। फिर MNY, फिर इंडिया आ गया, और फिर बाद में तुम देखोगे कि 1925 में मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद अमीर डांगे, नलिनी सेनगुप्त, शौकत उस्मानी, इन सभी ने मिलकर एक संस्था बनाई, ऑर्गेनाइजेशन बनाया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और वो 1925 में एक्चुअली कानपुर में उनका एक ऑल इंडिया सेशन हुआ, और उसको प्रेजाइड किया एम सिंगार बेरू ने। उसको प्रेजाइड किया, और इस प्रकार से संस्था वहां वर्क करने लगी। इन दिस वे यू कैन सी दिस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड टू वर्क। तो इसको कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इन दिस वे दिस वाज गोइंग ऑन। अब उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी उसने एक 1928 में एक संगठन बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया। उस संगठन का नाम था वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी, और वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी के माध्यम से वर्कर्स और पीजेंट्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी उसने बनाई। अब स्टूडेंट्स, अब इस तरह से आप देखते हैं कि वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी बन गई और वो काम करने लगी। तो लेकिन लेनिन के ही सजेशन के अनुसार जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने का निर्णय, जो लेनिन का कहना था जो कम्युनिस्ट पार्टी उसको इंडियन नेशनलिस्ट पार्टी के साथ मिलकर काम करना चाहिए, तो उसने कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना शुरू किया शुरू में। यही मैंने आपको बताया था इंग्लिश में, अब बताते हैं आगे। बट माय फ्रेंड्स, एक्चुअली बेसिक प्रॉब्लम विद द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज दैट it didn't define its strategy according to the specific Indian condition. The Communist Party of India was basically guided by the signals from Moscow, and whatever the signals were coming from Moscow, the Communist Party was simply playing on Moscow's tune. So that's why it could not strike its root in Indian soil or Indian condition. I'll just make you clear later whenever I teach you the world history. China, when the Communist Party became active in India, at the same time the Communist Party was active in China. But the Chinese Communist Party was in a stronger position later, and the Chinese Communist Party could, in the better way, Chinese Communist Party will just come to realize this party could, you can say, strike its roots in China. Why? There was a communist leader in China, his name was Mao Zedong. Mao, you might have heard the name. So Mao redefined the strategy of Communist Party of China. He was not simply playing on the tune of Moscow. He even developed the differences with Moscow whenever the situation required. Because Moscow, after all, you can say Makkah of communism, you can say. But he was not guided by Moscow blindly. He tried to redefine his strategy according to the specific Chinese situation. Can you believe that? Whether Karl Marx or Lenin or Stalin, whatever may be the Chinese stalwarts or the Russian stalwarts, so they were not going to accept peasants as proletariat class. They believed that the peasants were having the private property. But Mao Zedong came to realize that actually China, or you can say except Japan, whole of Asia didn't undergo the phase of industrialization. So the number of industrial workers were very small, the very tiny population. That is the 1% of the total population, and the population of peasants was almost 85 to 90%. So Mao Zedong came to realize that it is not a mistake on our part. You are taking the working class as the true proletariat, and we are neglecting the peasants. So he declared that peasants are the proletariat, and he organized the Chinese Communist Revolution on the basis of the peasant force, and he got success. But it could not happen in case of India, you can say. Suppose in 1928, Lenin died in 1924. His successor was Stalin, and as Stalin was a successor, so Stalin was a very man of the different stuff. He was a hardliner. In 1928, Stalin passed a verdict to the Communist Party of the world, Communist parties of the world. You have to break your relationship with the bourgeoisie party or the nationalist party, and you have to chalk out your separate strategy. So, having been taking the guideline from Moscow, the Communist Party of India broke relations with the Congress, and it just separated its path. But the British government was already irritated at the behavior of the Communist Party, and for the British government, the Congress or any other middle class party was a less danger, and Communist Party was a major danger. So the British government just, you can say, cracked down on the Communist Party, and it introduced the so-called Meerut conspiracy case.
And in Meerut conspiracy case, 32 communist leaders, among them the three were the British, Dutt, Bradley and Spratt. They were the British communist leaders. So all the 32 communist leaders were just arrested and put into jail. And this conspiracy case continued for 2.5 years. Although the Congress sympathized with the communist leaders and even raised the issue. And in 1934, the government even declared Communist Party an illegal party in India. But my friends, once again there was a change in policy in Moscow, because in 1935 there was the 7th Communist International, session of 7th Communist International in Moscow, and at that time there was Stalin. So Stalin was there. So Stalin gave another verdict, because at that time in Europe there was the rise of Hitler. So after the rise of Hitler in Germany, Stalin was a bit worried and scared. So Stalin was just extending actually Stalin was seeking the support from France and Britain against Germany. So that's why he changed his attitude towards now the bourgeoisie party and the capitalist, and you can say the capitalist model and the capitalist countries. So he just passed a verdict to the Communist Party all over the world. He passed an order and passed a verdict that the Communist Party all over the world had to work along with the Nationalist Party and to make a joint front against the fascist power. So as he gave the verdict, so once again in 1936, the Communist Party of India rejoined the Congress. And between 1936 to 1942, the Communist Party once again worked along with the Congress. But in 1942, once again you can say, the Communist Party broke the relations with the Congress and withdrew from the Quit India movement. So my friends say the Communist Party of India could not follow the consistent policy. It was basic weakness for the Communist Party of India. मतलब मैं आपको बताना चाहता कि जैसे जब इंडिया में जैसे कम्युनिस्ट पार्टी स्टैब्लिश हुई, उसी समय चाइना में भी हुई थी। लेकिन चाइना का जो कम्युनिस्ट पार्टी थी सफल हो गई, क्योंकि उसने अपने आप को, क्योंकि देखो मास्को से ब्लाइंड सिग्नल से काम करती थी इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, और चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो बहुत अपनी रणनीति खुद बनाती थी, अपनी स्ट्रेटेजी। जैसे माओ सेतुंग के विषय में कहा से काम करती थी इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, और चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो बहुत अपनी रणनीति खुद बनाती थी, अपनी स्ट्रेटेजी। जैसे अब माओ सेतुंग के विषय में कहा जाता है, उसने मास्को से ब्लाइंडली कभी फॉलो नहीं किया। माओ सेतुंग का माओ लीडर था, जैसे जब लेनिन हो, स्टालिन हो या कार्ल मार्क्स भी था, तो कहता था कि जो प्रोलेटेरिएट सर्व आ रहा है कि वर्कर्स है, पेजेंट्स नहीं है। अपना मार्क्स का प्रोग्राम था वर्ल्ड स्टेट बताऊंगा, उसका प्रेजुडिस था अपना कुछ। तो अब माओ सेतुंग ने देखा कि भाई ये तो यूरोपियन सच्चाई है, इंडस्ट्रियल वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स है, जर्मनी में है, बाकी कंट्रीज में है। तो उसने कहा कि हमारे यहाँ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ही नहीं है, तो हमारे यहाँ तो 1% इंडस्ट्रियल वर्कर्स है और 99% तो पेजेंट्स है, किसान है। तो उसने अपनी रणनीति बदल, दिखा कि नहीं सर्व आ रहा है प्रोलेटेरिएट केवल इंडस्ट्रियल वर्कर्स नहीं है, पेजेंट्स। और चाइना में जो कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन होगा वो पेजेंट फोर्स के आधार पर होगा, और फिर सक्सेसफुल हो गया। और हमारी कम्युनिस्ट पार्टी उसको इंडिया की कंडीशन के अनुसार अपने आप को डिफाइन करना चाहिए था। यहाँ पर कास्ट था, तो जो क्लास जो बोल रहा था प्रोलेटेरिएट क्लास, तो यहाँ पर लोअर कास्ट को पकड़ लेता और लोअर कास्ट को प्रोलेटेरिएट मान लेता, तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो इसने अपने आप को यहाँ की तरफ से डिफाइन नहीं किया। दूसरी बात है कि जैसे जब मार्क्स को जो निर्देश देता ब्लाइंडली फॉलो करता। जैसे मार्क्स को ने लेनिन के समय कहा कि भाई निर्देश हुआ कि आप कांग्रेस के साथ मिलकर काम करिए, तो 1920 तक कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया। फिर आ गया स्टालिन, तो सिक्स कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सेशन में उसने कहा कि नहीं, जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको अपने देश की जो बुर्जुआजी पार्टी है, नेशनलिस्ट पार्टी है, उससे अपना रिलेशन तोड़ लेना चाहिए। इसने कांग्रेस रिलेशनशिप 1920 में तोड़ लिया और अलग हुआ। उधर जो गवर्नमेंट था पहले से चिरी बैठी थी, कम्युनिस्ट पार्टी को नापसंद करती थी बहुत ज्यादा, तो गवर्नमेंट ने इनके ऊपर दमन चक्र शुरू कर दिया और 1929 में मेरठ षड्यंत्र केस ला दिया, कॉन्स्पिरेसी केस। उसमें 32 कम्युनिस्ट लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। लेकिन कांग्रेस ने उनको सिंपैथी दिखाई, लेकिन 2.5 वर्ष तक वो कॉन्स्पिरेसी केस में फंसे रहे, और 34 में गवर्नमेंट ने उसको कम्युनिस्ट पार्टी को इलीगल घोषित कर दिया। लेकिन फिर जब 7वीं कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की बैठक मॉस्को में हुई सेशन, तो उस समय तक स्टालिन का नजर दृष्टिकोण बदल चुका था, क्योंकि उसमें हिटलर का उद्भव हो गया था, जर्मनी में उसके नेबरहुड में था, और स्टालिन को हिटलर से खतरा लग रहा था। तो हिटलर स्टालिन चापलूसी कर रहा था ब्रिटेन और फ्रांस का, ब्रिटेन और फ्रांस हमारी मदद में आ जाएगा, हिटलर के अगेंस्ट में लड़ पाएंगे। तो क्योंकि तो कैपिटलिस्ट कंट्री थे, तो अपना लैंग्वेज बदल लिया स्टालिन ने। फिर कहा दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टी को कि आप लोग अपने नेशनलिस्ट पार्टी या बुर्जुआजी पार्टी के साथ मिलकर जो डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाइए, क्योंकि दुनिया में फांसीवादी, जैसे नाजी पार्टी या जो जर्मनी में फांसीवादी ताकत है, तो दुनिया में हमको फांसीवादी ताकत से लड़ना है। तो फिर 1936 से फिर कम्युनिस्ट पार्टी आ गई कांग्रेस के साथ, और 1942 तक रही। और फिर 1942 में इसने क्या किया कि फिर एक बार जब कांग्रेस से नाता तोड़ लिया और क्विट इंडिया मूवमेंट चला, भारत छोड़ो आंदोलन, तो उसमें हिस्सा नहीं लिया। कोई पार्टी का कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं रही। तो इसमें देखो कंटेंट की तुम्हें कमी नहीं होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखो, आप देखिए यहाँ पर मैंने नहीं दिया, जैसे कम्युनिस्ट मूवमेंट जितना लिखना है आप यहाँ से ले लोगे, और फिर लिमिटेशंस में मैंने दिया, शॉर्ट में दिया, ऊपर कहानी मैंने बता दिया, राइटिंग में तुमको इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अनलाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इट डिडंट चॉक आउट प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंडीशन, फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिक डिवीजन, सोशल डिवीजन, जेंडर डिवीजन, कास्ट एक्सप्लॉइटेशन वर क्लियरली विजिबल इन इंडिया, बट द कम्युनिस्ट पार्टी फेल्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ देम। कम्युनिस्ट पार्टी है उसका फायदा नहीं उठाया। Apart from that, the model of the violent revolution was suitable for an autocratic government of Soviet Russia, but not for India. Here, the model of democratic socialism could have proved more suitable than the communist model. अब एक ऑथर है भगवान जोशी ये बात को कहते हैं, वो कहते हैं कि देखिए जो कम्युनिस्ट पार्टी जिस तरह से वायलेंट रिवॉल्यूशन की बात कर रही थी, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट की बात कर रही थी, ये सब रशिया जैसे कंट्री के लिए तो ठीक था, क्योंकि वहां पर जो मोनार्की थी और बहुत
क्रूअल एंड बहुत टफ मोनार्की थी, इंडिया के लिए सुटेबल नहीं था। वो बोला कि इंडिया में जो ब्रिटिश थे वो कम से कम सेमी डेमोक्रेटिक होने का नौटंकी करते थे, यहाँ के लिए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ज्यादा सुटेबल था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया में इतने सारे मल्टीपल फैक्टर्स थे, जेंडर एक्सप्लॉयटेशन था, कास्ट एक्सप्लॉयटेशन था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था, तो कम्युनिज्म को पनपने का बहुत अच्छा अवसर था। बट इन केस ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी वाज हैविंग अ केस ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, इट वाज अ केस ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। इतना बढ़िया उनको अपॉर्चुनिटी थी, फिर भी इंडिया में नहीं पनप पाए। फिर I have just talked about the Communist Socialist Party, and then you can say the limitations, and then you can say role of Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose. What is about this as the first diagram I have talked about? Then here I have to mention about this Congress Socialist Party. Congress Socialist Party. Do you know short form is CSP? The Congress Socialist Party, the short form is CSP. Actually, what was the case? Some Congress leaders, they were arrested and they were languishing in Nasik jail in 1933. For example, you come to know there were certain leaders: Acharya Naren Dev, Jayaprakash Narayan, Ashok Mehta, Sampurnanand Singh, Meenu Masani. These were the certain leaders who were languishing in Nasik jail in 1933. So it was in Nasik jail they formulated, they chalked out a plan. You have to create a socialist party, but you have to work within Indian National Congress. They were the members of Indian National Congress. They just tried to, you can say, form a Congress Socialist Party, that is CSP, the Congress Socialist Party, and decided to work within Indian National Congress. Work within Indian National Congress, not outside that. And in 1934, when they were released from the jail, they formed this party at Bombay. So there was the formation of CSP, Congress Socialist Party, at Bombay in 1934, and the leaders were active. And in 1935, in its Meerut thesis, this party decided we have to work within the Indian National Congress, and we have to work for the national liberation and the socialist transformation both. And we have to try to, you can say, gradually transform the Congress. We have to try to gradually transform the Congress to the direction of socialism. And on the basis of objectives and programs, we have to channelize the Congress to the objective of socialism. So this was their basic emphasis, But they are having their own limitation, They believe that if there is any clash between the two interests means if there is a clash between the interest of national liberation and that of socialist transformation, we have to give priority to the objective of national liberation first, and we will just, you can say, make the issue of socialist transformation as the secondary issue. अब बताइए आप कैसे वो सफल होती, तो पहले ही सोच लिया था। मैं इनका बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता थे, वो नासिक जेल में बंद थे 1933 में, तो वहीं पर उन्होंने डिसाइड किया कि हमको एक कांग्रेस समाजवादी दल गठित करना है और कांग्रेस के अंदर हमें काम करना है, कांग्रेस के अंदर ही रहकर काम करना है, और कांग्रेस को आइडियोलॉजी एंड द ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पर, विचारधारा और संगठन के स्तर पर हमें समाजवाद की दिशा में मोड़ना है। ये कौन नेता थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे, संपूर्णानंद सिंह थे, मीनू मसानी थे, प्रकाश नारायण थे, अशोक मेहता थे, यही सब लीडर्स थे। तो जब 1934 में जो जेल से निकले, 1934 में उन्होंने बॉम्बे में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की और तय किया कि हमको विचारधारा और संगठन के आधार पर कांग्रेस को समाजवाद की दिशा में मोड़ना है। 1935 में उन्होंने मेरठ थीसिस लाई। लेकिन अब इनका लिमिटेशन क्या है कि इन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि अगर हमारे राष्ट्रवादी उद्देश्य और समाजवादी उद्देश्य के बीच किसी प्रकार की टकराहट होगी तो हम प्राथमिकता राष्ट्रवादी उद्देश्य को, नेशनलिस्ट ऑब्जेक्टिव को देंगे। उन्होंने तो पहले ही अपने सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को ही डाइल्यूट कर दिया, आप समझ सकते हो। तो ये हुआ दूसरा। और तीसरा है सोशलिस्ट लीडर्स लाइक Jawaharlal and Subhas. Jawaharlal and Subhas. As a third group, I have to talk to you. Here you come to know who are that. That is called Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose. Among the youth leaders, you can say, gradually you can say the idea of socialism was, you can say, putting its impact on the leaders like socialist leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose. So, and the youth leaders were falling under the impact of this socialist idea. You have already knew the fact that you are the members of HSRA. They fell under the spell of this so-called Socialism, the Hindustan Socialist Republican Association. You already know the fact. Here you find the name like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose. Jawaharlal Nehru presided over first in 1929. That was Lahore session. I have told you earlier. In this session, he boldly himself declared that I am a democratic and I am a socialist. I am a socialist and democratic. In Lahore session, he made the statement. I don't believe in the kings and princes. While presiding over the Lucknow session, he made a statement I have told you earlier. I think the only solution to India's and world problem is socialism. Then in Lucknow session in 1936 and in Fazpur session 1937, Jawaharlal Nehru presided over the session, and this Lucknow session and Fazpur session under the socialist influence, you will come to realize lots of socialist programs were introduced, lots of the agrarian reforms program and some programs in favor of the cultivators or peasants. So some programs were introduced in the Lucknow session and Fazpur session, you can say. So in the Lucknow session and Fazpur session, he just presided over the Lucknow session and Fazpur session. And in Lucknow session and Fazpur session, some progressive agrarian programs were introduced. So that was the achievement of these sessions, Then in 1938, Jawaharlal Nehru just presided over both the sessions. In 1938, Jawaharlal Nehru just went there. He just went on a trip of Europe, and he was moving from here and there, even with Indira Gandhi. Actually, at that time, Jawaharlal Nehru was he felt a very lone moment in his life. He was suffering from a personal loss because his wife Kamala Devi passed away 2 years back, 1.5 years back, So he was having a sense of, you can say, the personal loss. He was having a sense of personal loss for her. In order to bide his time, he just moved to Europe along with his daughter Indira Gandhi. In the meantime, in 1938, in Haripura session, Subhash Chandra Bose presided over the session, and it was in Haripura session, you can say, he formed the so-called Yojana committee for the first time in Haripura.
Haripura session, the Yojana committee was formed in 1938, Yojana committee. And this Yojana committee, the chairman of the session of Haripura presided over Subhas. But it was Jawaharlal Nehru who, in absentia, Subhas made him the head of Yojana committee in 1938. In absentia, he was in Europe, And then you can say the next session had to take place in Tirupuri in Madhya Pradesh, Now, my friends, here you find the differences between Gandhi and Subhas came to the surface. Now, here I have to inform you that actually, normally it is believed that Jawaharlal Nehru was having the adversarial relations with Subhas, but it is a wrong notion. For your time information, if Jawaharlal Nehru was at least not the soul mates with Subhas, Jawaharlal Nehru was having some ideological affinity with Subhas. If ideologically Jawaharlal Nehru was much near to any Congress leader, not to speak of Vallabhbhai Patel, because with Vallabhbhai Patel, he was having lots of ideological differences, Jawaharlal Nehru. And not to speak of, you can say, actually Gandhi, because Subhas was having differences with Gandhi as well. Sorry, not Jawaharlal Nehru. Ideologically, he was having a difference with Gandhi. But basic problem with Jawaharlal Nehru was that he started to take Gandhi as his father figure. Particularly in 1931, when Motilal Nehru passed away, so Nehru became emotionally dependent over Gandhi. So he emotionally became over dependent over Gandhi. So Subhas could not break with Gandhi. It was the basic problem. Although here I have to inform you, in 1936, when Pandit Nehru was in jail earlier, and Subhas was also in jail, but Subhas was just, you can say, given some leave from the jail on parole, and he had to take the personal treatment in Europe. So he went to Europe, and he was in Europe at that time. In the meantime, Kamala Nehru, she fell ill, and she was, having the severe problem of tuberculosis. So there was no treatment in India at that time. So even she had to move to Europe for treatment. And Indira Gandhi, along with her mother, she went to Europe because Jawaharlal Nehru was in jail. But later the government gave him the leave on parole to go to and to, you can say, give treatment to his wife and to take care of his wife. So he went to Europe as well, Jawaharlal Nehru. But it was in some hospital in Switzerland in 1936. Kamala Nehru died, expired. So at that time, Subhas was there to help Nehru. And even Nehru could perform the cremation of Kamala Nehru with the help of Subhas. So both were very close to each other, But it happened up to Tripuri session when Subhas returned from Europe, and in 1939, when he returned in 1939. So basically, it was in 1939. The next session had to take place, that is called the Tripuri session, So as the socialist leader, because at that time the Congress was divided between two factions, the rightist faction and leftist faction. The leftist faction was being led by Subhas Nehru, Achan Narendra, and the members of the Congress Socialist Party. And the rightist faction was led by Vallabhbhai Patel, Chakravarti Gopalachari, and Dr. Rajendra Prasad. Here I have to give you the very interesting information. Vallabhbhai Patel was having some personal escort to be settled by Subhas. Because actually, Vallabhbhai Patel, the elder brother of Vallabhbhai Patel was Vithalbhai Patel. So Vithalbhai Patel was not having the good relations with Vallabhbhai Patel. Both the brothers were having the strained relationship. And Vithalbhai Patel was very close to Motilal, you can say here, Chittaranjan Das. And Chittaranjan Das was the political patron of Subhas, the political guide, you can say, or you can say the patronized Subhas as his disciple. So Subhas was having the respect for Chittaranjan Das, and Chittaranjan Das and Vithalbhai Patel were very close friends. So Subhas developed the relationship with Vithalbhai Patel as well. In 1936, when Vithalbhai Patel was dying in hospital in Europe, so Subhas helped him and extended to him the, you can say, greater service at the time of need. So Vithalbhai Patel was much impressed with Subhas, and he transferred his personal property in the name of Subhas. It was not for enjoying the property or for making the Subhas rich. It was due to the fact that, according to Vithalbhai Patel, Subhas had to explain this property for promotion of national movement at his own discretion. When Subhas returned to India, the Vallabhbhai Patel started to demand from Subhas, return this property, because I will decide how will it be explained. It is my parental property. So Subhas refused to cooperate with him. So Vallabhbhai Patel was, you can say, a very reputed lawyer. So he just sued against Subhas, and he started legal battle with Subhas, and then Subhas lost the legal battle, and finally the property was transferred from Subhas to Vallabhbhai Patel again. So it was due to this factor that Vallabhbhai Patel was having some personal differences with Subhas, and it was in this case, you can say, that Vallabhbhai Patel even tried to impress Gandhi and just instigated Gandhi to against Subhas and to rise against Subhas. In Tripuri session, Vallabhbhai Patel and Rajendra Prasad and many other leaders just met Gandhi and just told Gandhi, Bapu, what is happening? All the socialist leaders are occupying the Congress platform. So Gandhi was also having some rightist stage, and he was not having the good relations with Subhas personally. So he tried to replace him as the next president. So that's why he started to choose some candidate. So first he made a contact with Maulana Abul Kalam Azad, but Maulana Abul Kalam Azad refused to be president. Even he talked to Nehru, but Nehru was not ready to take the presidency. Then he talked to Pattabhi Sritarmaiah. Even without talking him, he declared himself to be the candidate. Subhash Chandra Bose just came to realize that Gandhi just tried to replace him, and Subhash Chandra Bose declared that I think the post of the president should be elected on the basis of the issues. So I will prefer to fight the elections because I am having some issues. I have left my work half done in Haripura session, so I need one more session to complete my work. So it is on this basis you can say Subhas fought the elections in Tripuri session of 1939. To the greater surprise to Gandhi and other Congress members, Subhas went far ahead of this candidate of Gandhi, Pattabhi Sritarmaiah. Subhas got 1577 votes, while Pattabhi Sritarmaiah simply 1380. So Gandhiji was quite disturbed. He declared that the defeat of Sritarmaiah is my defeat, and I am just going to resign from the Congress. Congress has become larger than me, and so on. So then all the, you can say, leaders just fell down on the feet of Gandhi, and they deserted Subhas. So Subhas was completely isolated. Then, even after being elected president, he was unable to form his executive committee because even the members of the executive committee didn't, you can say, cooperate with him. So finally, he decided to resign from the Congress presidency, and in 1939 he resigned from the Congress presidency, and then he moved to Bengal. He was the head of the Bengal PCC. Bengal, he was the provincial committee chairman. So he just went to Bengal, and there he formed a new party in 1939 that was Forward Bloc. It was the parting off the wage of Subhas from the mainstream Congress politics, and he became more active in the politics of Bengal after that. And it was also, you can say, differences cropped up between Nehru and Subhas due to Gandhi here, because Nehru could not stand by Subhas during this critical juncture. So this was the basic problem, because after all he was having some emotional, you can say, tilt towards Gandhi. It was the basic problem.
तो आप लोगों ने तो मैंने इंग्लिश में भी तक बताई, तो मैं हिंदी में बता देता हूँ, टाइम भी तो खींच रहा है। एक्चुअली क्या हुआ कि अब कांग्रेस में सोशलिस्ट लीडर, समाजवादी जो टेम्परामेंट के लीडर्स, उसमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। तो उन्होंने धीरे धीरे कांग्रेस पर अपना प्रभाव क्षेत्र बनाना शुरू कर दिया। नेहरू 1936 के लखनऊ सेशन में और 1937 के हरिपुरा सेशन में पार्टिसिपेट किया। सुभाष और सॉरी नेहरू 1936 के लखनऊ सेशन, 1937 के फैजपुर सेशन को प्रेजाइड किया, और उसमें जब उसके अध्यक्ष बने तो उन्होंने बहुत सारे एग्री यानी कृषि प्रगतिशील कृषि कार्यक्रम लाए, किसानों के पक्ष में समाजवादी कार्यक्रम लाए। और 1938 में तब तक नेहरू चले गए यूरोप की यात्रा पर, वहीं पर वो कहीं पर घूमने लगे ऑस्ट्रिया, वियना वगैरह में, और तब तक सुभाष यहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1938 में हरिपुरा में। तो उन्होंने भी एक योजना कमेटी बनाई, ये सोशलिस्ट प्रोग्राम था, योजना कमेटी। उसका चेयरमैन उन्होंने नेहरू से बात की, यूरोप में नेहरू थे कि उनको चेयरमैन बना दिया सुभाष ने उस कमेटी की। नेहरू तैयार हो गया चेयरमैन बनने के लिए। अब जो नेक्स्ट सेशन होने वाला था, एक्चुअली नेहरू और सुभाष बड़ा सोलमेट थे। मैंने कहानी बताई कि यूरोप में क्या हुआ था कि 1936 में जो सुभाष चंद्र जवाहरलाल नेहरू है, उनकी वाइफ थी कमला नेहरू, तो वो बीमार पड़ गए थे, उनको ट्यूबरकुलोसिस था। तो यहाँ से इंदिरा गांधी लेके उनके यूरोप गई, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू उसमें कैद थे, और सुभाष चंद्र बोस उस समय ट्रीटमेंट के लिए यूरोप गए हुए थे जेल से ही, तो भी यूरोप में थे। तो यहाँ से जब नेहरू, हालांकि वो तब तक वो रिकवर कर चुके थे सुभाष, और यहाँ से नेहरू अपनी भी छूट कर गए, क्योंकि जेल अथॉरिटी में गवर्नमेंट में उनको छूट दी कि अपनी वाइफ को देखने, लुक आफ्टर करने के लिए यूरोप जा सकते हैं, तो गए। तो वहीं पर स्वीडन के हॉस्पिटल में कमला नेहरू का डेथ 1936 में हुआ। तो सुभाष ने उनको बहुत सपोर्ट किया, नेहरू को क्रीमेशन में भी, उनको जलाने में भी, उनके दाह संस्कार में भी। और सुभाष और नेहरू में वैसे भी तुम देखते हो कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग शुरू से ही दोनों सोलमेट थे। दोनों में कोई डिफरेंसेस हुआ तो गांधी के कारण हुआ, क्योंकि नेहरू गांधी को अपने पिता तुल्य देखने लगे थे, विशेषकर 1930 में मोतीलाल नेहरू का डेथ हो गया। और इधर जब 1938 में हरिपुरा सेशन को प्रेयर किया, तो उसके बाद उधर वल्लभ भाई पटेल थे, चक्रवर्ती गोपालाचारी थे, और राजेंद्र प्रसाद थे। ये सब थे दक्षिणपंथी गुट कांग्रेस का, और वामपंथी गुट जो थे राइटिस्ट, वो सब थे, और लेफ्टिस्ट गुट का थे सुभाष, नेहरू, आचार्य नरेंद्र, जयप्रकाश नारायण, सब लेफ्टिस्ट गुट थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो भी थे, गांधी नेहरू सोशलिस्ट पार्टी के नहीं थे, ध्यान रखना। नेहरू के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि कौन कांग्रेस का लीडर था जिसने सीएसपी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को बनने पर उसको आशीर्वाद दिया था, परंतु खुद मेंबर नहीं हुआ था, वो नेहरू ही थे। आशीर्वाद तो दिया परंतु मेंबर नहीं हुए थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का। तो ये भी थे। तो उसमें क्या हुआ कि अब अच्छा, वल्लभ भाई पटेल का सुभाष से दुश्मनी इसलिए हो गई थी, दोनों में डिफरेंसेस, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल का बड़ा भाई था विठल भाई पटेल, जो चित्तरंजन दास के बहुत क्लोज रहे थे, और चित्तरंजन दास के शिष्य रहे थे सुभाष। तो विठल भाई पटेल से सुभाष के भी अच्छे संबंध थे। और 1936 में सुभाष गए थे, तो विठल भाई पटेल यूरोप गए थे वहां पर ट्रीटमेंट के लिए। उसी ट्रीटमेंट के दौरान विठल भाई पटेल का डेथ हो गया, उसको सुभाष चंद्र बोस ने बड़ी सेवा की थी। तो विठल भाई पटेल ने अपनी प्रॉपर्टी सुभाष के नाम कर दी, कहा कि जो नेशनल मूवमेंट में जो एक्सपेंडिचर है सुभाष उसको देखेंगे। इस बात पर पटेल को कहीं ना कहीं बहुत गुस्सा आया कि हमारी फैमिली प्रॉपर्टी सुभाष को ले लिया। तो सुभाष को बोले कि हम प्रॉपर्टी लौटाइए, हम उसको स्पेंड करेंगे नेशनल मूवमेंट पर। तो सुभाष ने मना कर दिया। तो इस पर गुस्सा खा के बहुत अच्छे तो लड़ते थे, उन्होंने मुकदमा डाल दिया इन पर, और फिर मुकदमा जीत गए। जब केस जीत गए तो फिर प्रॉपर्टी आ गई वल्लभ भाई पटेल के पास। तो बेसिकली यही वल्लभ भाई पटेल और गांधी को सुभाष के विरुद्ध भड़काते थे, और नेहरू मजबूर हो जाते थे। तो 1939 में जब त्रिपुरी सेशन होने वाला था, तो उस समय तक नेहरू पहले आए नहीं थे। तो यहाँ से फोन किया इन्होंने गांधी ने नेहरू के, नेहरू पंडित तुम ही बन जाओ प्रेसिडेंट, तो मना कर दे। मौलाना आजाद को कहा कि आप बन जाइए मौलाना, तो मौलाना भी मना कर गए, बोले कि नहीं बन सकते, क्योंकि वो भी कलकत्ता से, मौलाना को लगता था कि कलकत्ता में लोग हम पर नाराज होंगे, क्योंकि सुभाष को बहुत पॉपुलरिटी थी कलकत्ता में, तो नहीं बने। तो फिर पटापी सीतामैया को खड़ा कर दिया, गांधी जी को लगता था हम जीत जाएंगे। तो लेकिन जब पटापी सीतामैया को खड़ा किए तो कुछ बात बनी नहीं, पटापी सीतामैया चुनाव हार गए, और सुभाष को 1577 मिली वोट्स, और उनको 1380 30 मिली। तो फिर गांधी जब बहुत इमोशनल हो गए, बोले कि सीतारामैया की हार मेरी हार है, कांग्रेस मुझसे बड़ी हो गई, मैं रिजाइन करूंगा कांग्रेस से। तो पूरे कांग्रेस पार्टी के जितने भी वॉलंटियर्स सब सुभाष के पैरों पर, सॉरी गांधी जी के पैरों पर गिर गए कि नहीं बापू आप नहीं जाइए, आप अगर नहीं चले गए तो हम ऑर्फन हो जाएंगे। अब सुभाष बड़े मुश्किल में पड़े कि भाई प्रेसिडेंट हमें बनाया है और अपना पूरी आस्था गांधी में दिखा रहा है, तो हम काम कैसे करेंगे। वही हुआ कि सुभाष नहीं काम कर पाए, एग्जीक्यूटिव फॉर्म करना चाहे कार्यकारिणी, तो उसके मेंबर्स ने इनके साथ कोऑपरेट नहीं किया, सुभाष रिजाइन कर दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने तुरंत नया प्रेसिडेंट के रूप में वही पदभार संभाल लिया सुभाष यहाँ से। फिर वेस्ट बंगाल के पॉलिटिक्स में चले गए, वहीं पर फॉरवर्ड ब्लॉक में 1939 में बनाई। तो फॉर टाइम बीइंग सुभाष का पार्टी अभी हो गया मेनस्ट्रीम कांग्रेस पॉलिटिक्स से, और नेहरू और सुभाष के बीच डिफरेंसेस हो गया। तो इसका एग्जाम से कोई मतलब नहीं है, यू विल नॉट फाइंड सच अ क्वेश्चन, बिकॉज दिस वाज लाइक भगत सिंह एंड गांधी, इट वाज अ डिस्प्यूटेड इशू, सो दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट ट्राइड टू क्लैरिफाई योर विजन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन गांधी एंड सुभाष। बट देयर वाज वन क्वेश्चन ऑन गांधी एंड सुभाष व्हिच आई डिस्कस्ड विद यू इन 2016 UPSC, so I'll make you clear what is the question and I'll give you some extra matter as well on the issue. So socialist leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose, so this is the point here. Now my student, in this way you have to make this point clear. The last one, although I've exhausted the time, but I will talk about two things. Role of Jawaharlal and Subhash Chandra Bose. My students, here the point is, if you have to talk about the contribution of this Congress, this communist movement and socialist movement, it transformed the Congress. Suppose you can say, you find the question, you'll find the point. Contribution of leftist parties in national movement. अब देखो मैं दो तीन मैं क्लू दे देता हूं। पॉइंट फर्स्ट, इट enlarged the meaning of freedom from political to economic freedom, मतलब इसने स्वतंत्रता के मतलब को बदल दिया, उसको राजनीतिक स्वतंत्रता से मतलब बड़ा किया। पॉइंट टू में देना, मोबिलाइज्ड पेजेंट्स एंड वर्कर्स and expanded the social basis of national movement. And point third, it influenced Congress politics. And the Congress adopted
adopted its socialist program in Karachi session 1931, Lucknow session, Fazpur session, Lucknow session, Karachi session, Lucknow session, Fazpur session, Lucknow session 1937, Fazpur session, sorry, Lucknow session 1936, Fazpur session 1937, and Haripura session. Then you just mention about 1938. Here in Haripura session, additionally you can mention in Haripura session there was the formation of a Yojana committee. In Yojana committee you can mention about. And then my students, you will talk about certain limitations as well. Limitations. About the limitations you can make this point even during, yeah, I'm changing the page about limitations so that you will be more clear. Visible limitations. Here you can say point, they fail to form the joint front even during the time of crisis. मतलब आप यहाँ पर त्रिपुरी सेशन का भी एग्जांपल दे सकते हो, साइड एग्जांपल त्रिपुरी सेशन. At the time of Tripuri session, they required a complete consolidation among the socialist group, but socialist group could not maintain the unity and integrity even during the crisis of the Tripuri crisis. So that is the weakness on their part. And at point number 2, you can mention if the Communist Party or the CPI, Communist Party of India, failed to chalk out its strategy, its strategy according to Indian condition. मतलब I have just talked about ये मास्को से गाइडेड हुआ इंडियन कंडीशन के अनुसार अपनी स्ट्रेटेजी को कभी वो बनाया नहीं, चॉक आउट नहीं किया. थर्ड में दे सकते हो कि CSP मतलब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी डाइल्यूटेड इट्स सोशलिस्ट ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. अब देखो, अब हम एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए फॉर्म कर देते हैं, मुश्किल नहीं होगी. जैसे ये 3 पॉइंट्स है ना, जैसे अबाउट द सोशलिस्ट कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, यू नो कि दैट इज व्हाट इज द डाइल्यूशन इन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी. यू नो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नेवर ट्राई टू, मतलब इट हैज मेड दिस पॉइंट क्लियर कि देयर विल बी एनी क्लैश बिटवीन द नेशनलिस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल लिबरेशन एंड सोशलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन. We will just choose the nationalist cause and we will make the socialist transformation as the secondary objective. तो डाइल्यूशन तो शुरू से ही कर दिया इसने, डाइल्यूटेड इट्स बेसिक ऑब्जेक्टिव सोशलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. अब मैं क्वेश्चन फॉर्म कर रहा हूं आप लोगों के लिए. दैट इज द लास्ट एंड आई विल स्टॉप हियर. थ्रो लाइट ऑन the role of the contribution of leftist ideas वही सिर्फ दोनों एक ही है, सोशलिस्ट या leftist ideas on national movement of India, या Indian national movement, on Indian national movement. Why did leftism fail to influence the course of fail to assert its hegemony on national movement of India 150 words. मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि पूरे नेशनल मूवमेंट लेफ्टिज्म के इंपैक्ट को बताइए, और ये हेजेमनी का मतलब वर्चस्व होता है हिंदी में, लेकिन आप प्रभाव क्षेत्र में मान लीजिए कि व्हाई डिड इट फेल टू असर्ट इट्स हेजेमनी ऑन नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया. मतलब ये अपने प्रभाव क्षेत्र को क्यों असर्ट नहीं कर सका, क्यों फेल कर गया. तो माय स्टूडेंट्स, विल यू ट्राई दिस क्वेश्चन? अंकुर आस्क माय स्टूडेंट्स, आर दे इन अ पोजीशन टू ट्राई दिस क्वेश्चन टुमारो? प्लीज गिव मी द हिंट, दैट इज द लास्ट एंड देन आई विल जस्ट फिनिश हियर. बी फास्ट माय स्टूडेंट्स. So my students, today I am stopping here because I could not make more progress. I have just stopped here. Tomorrow I will do the rest of the work tomorrow. Okay, my students. Thank you very much. I'll see you tomorrow. हाँ क्या? Art and culture is the future thing. That is, I just whenever I teach you art and culture, I will make you clear. For that, the best book on art and culture is A.L. Basham, The Wonder That Was India. If you can afford, but I think you will not do justice to the book. And so far, I will not teach you art and culture. You will not develop the confidence. So please wait for my part. Is there only one reason Hasan Khan is that is socialist in him? Socialist, and apart from that, the Subhas was a bit, you can say, more articulate. He was a bit, you can say, rebel in his approach. He was not submitting before Gandhi, just like Nehru. It was also a factor. So I am stopping here, my friends.